Priyal and I'm back with another video. Hope you all are doing great. So in today's video, I am going to be talking about brushes. I am going to talk about the only makeup brushes that you need if you're just starting with makeup or you want to start with makeup but you have no idea कि कौन सा ब्रश लें और कौन सा ब्रश नहीं लें. आपको हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है. और आज आप जो मेकअप देख रहे हैं वो मैंने उन्हीं ब्रश की हेल्प से किया है. सो आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज हाउ द रेड सब्सक्राइब बटन लुक्स लाइक. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. It's free. And now let's begin. So let's start with the first thing. The first thing is foundation, and for blending my foundation I like to use a beauty blender. I think beauty blender is a must for everyone. If you are professional makeup artist, if you are someone like me जिसको थोड़ा बहुत मेकअप आता है, और if you are a beginner जिसको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है बट वो मेकअप सीखना चाहता है, so I think the most important tool you need is a beauty blender. और मैंने भी जब मेकअप करना स्टार्ट किया था मेरे पास सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर था जिसकी हेल्प से मैं ऑलमोस्ट अपना पूरा बेस करती थी. और आई शेडो मैं उतना करती नहीं थी उस वक्त, तो मुझे ब्रशेस की नीड नहीं थी. बट मैं पूरा बेस तब भी और आज भी सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करती हूँ. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा ये चीज़. एंड आई रियली लव यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर. और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ब्रशेस पे स्विच करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर सब बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है. सो फर्स्ट, हाउ आई यूज माई ब्यूटी ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन. सो व्हाट आई डू, आई टेक द फाउंडेशन ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, डॉट इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स all over my face, जिससे अच्छे से स्प्रेड हो रहा है. And then from the back side of this beauty blender, I blend my foundation. Make sure your beauty blender is damp, because beauty blender अगर damp रहता है तो आपका product कम एब्जॉर्ब करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. नहीं तो अगर आप एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं और उससे आप अपने फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो आपका आधा फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका प्रोडक्ट वेस्ट जाएगा. एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रोडक्ट्स बिकॉज ये महंगे आते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर योर ब्यूटी ब्लेंडर इज डैम्प. एंड द सेकेंड थिंग, बिकॉज आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो और अच्छे से ब्लेंड करता है, इसलिए हमेशा और हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प यूज़ करिए. और जब आप वेट करते हैं उसको ऐसे स्क्वीज़ कर लीजिए जब तक इसका पूरा पानी बाहर नहीं आ जाता है, and then use it. You will see a huge difference. Now let's move on to the second thing, that is concealer. And for blending my concealer, again I use my beauty blender. Trust me, I can't do my makeup without my beauty blender. If you will ask me to do a challenge जहाँ मुझे बिना ब्यूटी ब्लेंडर के मेकअप करना होगा, मैं बहुत ही गंदा मेकअप करूँगी, ये पक्की बात है. बिकॉज आई कांट डू माई मेकअप विदाउट ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने अपना मेकअप सीखा ही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, सो आई कांट डू विदाउट इट. सो व्हाट आई डू, आई टेक माई ब्यूटी ब्लेंडर लाइक दिस एंड पिंच इट फ्रॉम द फ्रंट साइड, और फिर मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करती हूँ. और मैं इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि ये इनर कॉर्नर साइड में कभी कभार रह जाता है जो कि डिस्कलरेशन दिखता है, इसलिए मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसा पिंच करके और फिर अपना कंसीलर ब्लेंड करती हूँ. नाउ लेट्स मूव on to the third step. The third step is to apply powder, and for applying powder when I like to bake, I use my beauty blender because ये हल्का सा डैम्प होता है तो इसमें पाउडर बहुत अच्छे से पिकअप करता है. और फिर मैं इसे अपने अंडर आई पर लगा के 15 सेकेंड के लिए छोड़ देती हूँ. एंड देन आई लाइक टू डस्ट ऑफ with the help of this brush. This is how the brush looks like. This is a pointed fluffy brush and I use this brush in 3 different ways. So I use this brush to apply bronzer, blush and to do my nose contouring. And sometimes जब मुझे fingers use नहीं करनी होती है highlighter के लिए, then I like to use it for highlighter as well. So आपने देखा कि मैं एक ब्रश को कितने different way से यूज़ करती हूँ. और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैं बहुत से ब्रशेज यूज़ नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे पास 10 ब्रशेज हैं, बट फिर भी मैं ये गिने चुने ब्रशेज ही यूज़ करती हूँ. इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको पता चले कि सारे ब्रशेज होना ज़रूरी नहीं है. कुछ ब्रशेज जो आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो वो बस आपके पास होना ज़रूरी है. You don't need to invest in a full brush set, क्योंकि कई ब्रशेस रखे रह जाते हैं और आप उनको यूज भी नहीं करते हो. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं. आप पूरा ब्रश सेट लेना चाहते हैं या फिर आपको कुछ ही ब्रश चाहिए जिसकी हेल्प से आप मेकअप कर सकते हो. सो आई एम हियर जस्ट सजेस्टिंग, इट्स टोटली योर चॉइस. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ आई लाइक टू यूज दिस ब्रश टू अप्लाई माई ब्लश. ये ब्रश और ब्लश काफी टंग ट्विस्टर हो जाता है, सो ये काफी संभल कर बोलना पड़ता है. सो आई टेक माई ब्लश ऑन दिस एंड अप्लाई टू द एप्पल ऑफ माई चीज, एंड मैं इसको ऐसे अपवर्ड तक ले जाती हूँ और फिर मैं ऐसे सर्कुलर मोशन पर ऐसे ब्लेंड करती हूँ. मैं कोई भी चीज़ ऐसे सर्कुलर मोशन पर ब्लेंड करती हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है. एंड द सेम वे आई अप्लाई माई ब्रॉन्जर. आई टेक माई ब्रॉन्जर, ड्रॉ अ लाइन एंड देन आई लाइक टू अप्लाई इट ऑन अ सर्कुलर मोशन. एंड फॉर नोज contouring, what I do, I take this brush and pinch it like this, and I take some bronzer and draw the line across my nose to do nose contouring. And after that I use this brush to blend my
micro nose contour. So that's how I use this brush in many different ways. Now let's move on to the highlighter. So for applying my highlighter, I really like to use my fingers because I think fingers do the magic. And मैंने brush भी try किया है और मैंने fingers भी try करी हैं, but I think जितना अच्छा highlighter आपकी fingers की help से लगता है उतना अच्छा brush की help से बिल्कुल भी नहीं लगता है. And आप देख सकते हैं आज का highlighter कितना अच्छा glow मार रहा है because ये बहुत अच्छे से blend हुआ है. So I really like to use my fingers for applying highlighter. Now let's move on to the last and the main step, that is to do your eye makeup. And to do your eyeshadow, you only need these 3 brushes. So the first brush is this brush. So this is how the brush looks like. This is a pointed fluffy brush, and I use this brush when I want to apply eyeshadow to my crease because ये open है and you know eyeshadow लगाने के लिए आपको ऐसे ही brush की need है. So what I do, I take some eyeshadow and apply it to the outer V of my eye and take it to the crease, and I blend it in a back and forth motion, and it blends very easily. So this is the first brush that you need to have. Now let's move on to the second brush. So the second brush is this brush. So this is how the brush looks like. This is a pointed fluffy blending brush which is pointed and very precise. So when I want to apply a particular color to the particular area of my eye, I use this brush because इसके bristles you know एकदम pointed हैं और आपको यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा कलर. ये particular area पे बहुत अच्छे से work करता है. And I have used this brush today to apply the shimmer. So what I have done, I have picked some shimmer and I have applied it on my lid. जो crease से यहाँ नीचे हो रही है वहाँ पे मैंने इसकी help से अपना शिमर अप्लाई किया है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है. चाहे आपको शिमर अप्लाई करना हो, चाहे वो मैट शेडोज हो, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है और आप इसकी हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन भी फिल अप कर सकते हैं. नाउ द लास्ट ब्रश दैट यू नीड टू हैव इज अ स्मैश ब्रश. सो दिस इज हाउ द ब्रश लुक्स लाइक. दिस इज अ stiff smudged brush which you can use if you are into you know smoky eyes and coal eyes. इससे आप अपना बहुत अच्छे से smudge कर सकते हो. लाइनर, आई शेडो, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है. अगर आपने मेरा स्मोकी आई वाला ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें मैंने यही ब्रश की हेल्प से अपना काजल, अपना आई शेडो और लोअर लैश लाइन फिलअप करी है. एंड आज भी मैंने इसकी हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन फिलअप की है. सो व्हाट आई डू, मैं अपने आउटर वी के आई शेडो से कनेक्ट करके अपनी लोअर लैश लाइन फिलअप करती हूँ. और ये जैसे कि ये स्टिफ है, मतलब हार्ड ब्रिसल्स से नहीं है बट ये ऐसा पैक है, कॉम्पैक्ट है, तो इसकी हेल्प से आप अपना लोअर लैश लाइन फिलअप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छे से फिलअप होता है. सो आई रियली लाइक दिस ब्रश एंड दीज 3 आर द ओनली ब्रशेज दैट यू नीड इफ यू जस्ट स्टार्टिंग विद योर आई शेडो लुक. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू लाइक दिस video and found this video informative. If you did, you all know the drill. You have to like this video, subscribe to my channel. It's for free. Please subscribe because I know कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे videos देखते हैं और उन्होंने subscribe नहीं किया है. So please subscribe to my channel, share it with your families and friends, share it in your stories if you want to, and let me know what other videos you want me to do. And you can also follow me on my Instagram. My Instagram handle will be linked down in the description box. I will see you all in my next video. Till then, see ya. Bye.